इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप अपनी हाइट्स को छू रहे हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस का विजिट इस वीकेंड पे होने जा रहा है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होंगे। अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल विजिट अमेरिका का रहा। तो ये वो सिनेरियो है जो दुनिया में हमें बताता है कि भारत की पोजीशनिंग इस वक्त किस लेवल पे है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ चैलेंजेस जो दोनों देशों को अपने अपने देशों के अंदर फेस करना पड़ रहे हैं और उनको हम कॉमन इश्यूज भी कह सकते हैं और कॉमन चैलेंजेस भी कह सकते हैं, वो क्या हैं और कैसे दोनों देश इंटरनली अपने अपने उन इश्यूज को जो गैटोस के साथ रिलेटेड हैं डील कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम टच करेंगे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब अजीत डोवाल साहब ने रिसेंटली अरब स्कॉलर्स को होस्ट किया भारत के अंदर और उन्होंने जो बातें की वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो भी इस डिस्कशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। ये सब बातें हम करेंगे हमारे रेगुलर पैनलिस्ट स्कॉलर IIM रोहतक के डायरेक्टर जनाब धीरज शर्मा जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए रोहतक से। स्वागत करते हैं धीरज जी का। धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। हम अपने इस टेलीविज़न के ज़रिए आपको हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं और चाहते हैं कि सारे व्यूअर्स आपको गुड विशेस भी कहें और आपके लिए अच्छी बातें भी सोचें। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो इसी तरह क्रिएट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी डे टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैंने बातचीत शुरू की फ्रांस और भारत के तल्लुकात के हवाले से। तो फ्रांस और भारत के तल्लुकात की जो ऊंचाई है और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अपकमिंग विजिट के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे उसको देखते हैं? देखिए, इंडिया फ्रांस अगेन एक बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। अगर हमें हिस्टोरिकली हम इसे देखना चाहें तो फर्स्ट इंटरैक्शन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज एज ओल्ड एज मे बी 500 years। फ्रेंच विजिटर्स इंडिया आते थे, ट्रैवल करते थे। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं हम इंडिया फ्रेंच रिलेशन में। इंडिया की जो फ्रेंच रिलेशनशिप की क्लोजनेस, एक एस्पेक्ट ये भी था कि दे वर द काउंटर टू द ब्रिटिश इन्वेजन टू इंडिया। सो बहुत सारी लड़ाइयां हैं जैसे बैटल ऑफ आरकॉट या कर्नाटक वॉर्स या बैटल ऑफ मद्रास, जिसमें फ्रांस ने, चाहे उनका अपना इंटरेस्ट था इंडिया में, बट दे कोलैबोरेटेड विद इंडियन रूलर्स to fight against the British. It is very similar to how they supported the liberty seekers in the United States against the British. तो उनकी ब्रिटिशर्स के साथ एक रेस थी फॉर colonialism, फॉर ट्रेड, फॉर imperialism। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्जली देखा जाए तो ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। जैसे ब्रिटिश लेगेसी में तो इट इज मोर और लेस नाउ देयर इज अ कंसेंसस के British came and had a colonizing colony sort of a relationship with India. They were tyrannical. They also had a lopsided trade. They also took advantage. They also had a number of exploitative measures which took. फ्रांस के बारे में थोड़ा इसके एक्सप्लॉयटेटिव जो नैरेटिव है और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है उसके बारे में थोड़ी कम डिस्कशन है। फ्रांस ने बहुत सारे भारतीयों के, मैंने कर्नाटक वॉर्स पर्टिकुलरली बोला है, जिसमें फ्रांस ने सपोर्ट किया। मद्रास, बैटल ऑफ मद्रास, बैटल ऑफ आरकॉट, मराठास के साथ फ्रेंच हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। मॉडर्नाइजेशन के एस्पेक्ट के हिसाब से उनके ट्रुप्स में कंट्रीब्यूशन रही है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में 3000 फ्रेंच सोल्जर्स। ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट है, उसमें 2 या 3 तो जनरल्स थे। सो एक पुरानी रिलेशनशिप है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली अंग्रेजों से, तो इंडिया में फ्रेंच टेरिटरीज भी थी जो कि अगले 5-7 सालों में फ्रांस ने खुद सीड की इंडिया को। उनमें से एक टेरिटरी पुडुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, उन्होंने सीड की है। माहे, देयर आर अदर टेरिटरीज जिन्होंने सीड की।
उसके बाद हमारी कोई रैंकरस रिलेशनशिप फ्रांस के साथ नहीं रही है। भारतीयों ने अपना खून बहाया है फ्रांस की तकलीफ के दौरान, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन इन्वेजन हुआ, उस टाइम पे large number of Indians, as a matter of fact, the blood shed by Indians was far more than the blood shed by Canadians, Australians and many of the other Europeans in that particular sector. लोग कहते हैं that number is somewhere around 70 या 70,000. कुछ historians ये भी कहते हैं कि that number is around 65,000. But in any case, that number ranges between 65 to 75,000 people, जिनमें से बहुत सारे लोगों की वहां पर आज भी डिस्पाइट बीइंग हिंदू उनकी कब्रें हैं. मेनी ऑफ देम वर एक्चुअली वर क्रीमेटेड एज पर हिंदू राइट्स, तो उनकी कब्रें नहीं हैं. अदरवाइज सच लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, इसका रिकग्निशन निकोलस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी बेस्टिल डे परेड में इंडियन कंटिंजेंट को शामिल करके ये बताया भी था. और इवन नाउ मैक्रॉन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द फ्रांस, टू द आई वुड से टू गेट फ्रांस आउट ऑफ the situation that they were in First World War, Indian contribution is immense. So India French relationship पुराने टाइम से चल रहे हैं. और जब इंडिया को आजादी मिली उसके बाद बी इट डिफेंस में बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, इंक्लूडिंग द मोर रिसेंट राफेल जो फ्रांस से हैं. और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इंडिया की जो इसरो है, जो स्पेस एजेंसी है, उसकी फ्रेंच जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ रिलेशनशिप है. दे हैव अ agreement since 1990, early 90s से, and they collaborate on missions together. In addition to that, there is cultural exchange between India and France. In language teaching होती है इंडिया में, और वहां पर हिंदी language teaching होती है. उसके अलावा from the perspective of industry, although the trade between India and France is around maybe 10-12 billion dollars, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है. डिफेंस से अब एक्सपेक्टेशन है कि वो थोड़ा और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा. पर देर आर क्लोज टू आई थिंक अबाउट 9,000 के करीब फ्रेंच कंपनीज ऑपरेट विद इन इंडिया, which have an overall estimate of around 150,000 or 2 lakh people employed in some of those companies. India, on the other hand, also contributes to the IT sector of France and to the pharmacy sector of France. So there is a synergistic collaborative relationship between India and France, which has continued for a very, very long period of time. And now, at this point in time, they both share some of the problem areas in terms of dealing with migrants, dealing with minorities. They also face somewhat similar issues in terms of their relationships with the other European powers. India's relationship with UK is more or less similar to what maybe France's relationship with UK is. So a lot of these similarities have existed. We have common territories. एक और मैं आपको उसका example देता हूँ. Mauritius is a reflection of a typical blend between India and French culture. Mauritius में Indians हैं, French उनकी first language है, French बोलते हैं, और this is a amalgamation of Indian and French culture. लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप जिसको अभी फर्दर एक्सपैंड किया जा रहा है. इट इज एंटिसिपेटेड दैट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स फ्रांस देयर विल बी great deal of expansion, more agreements will be signed, and we are likely to see more defense cooperation between, and also an understanding in terms of several other international and strategic level issues will likely be achieved. I see India's Indo-French relationship becoming more and more strategically important, more and more close, and I think this is a reflection of the changing times, where the position that France or India would take would be
would be to serve the interests of their citizens, but at the same time to earmark the resources to develop a common path for growth, which not necessarily is same as that India would have with Germany or with UK. These alignments are shifting. So Europe together having a trajectory, what used to be the erstwhile times where everybody used to follow one line, that I think is going to shift now, with India becoming more and more economically powerful and more resilient, and more important in changing world order. जी, आपने भारत और फ्रांस के जो रिलेशनशिप है उनकी हिस्ट्री पर भी और उनकी जो करंट सिचुएशन है उस पर भी हमें बताया, और मैं आपकी बात सुनते हुए कनाडा और फ्रांस के साथ जो हमारे रिलेशन है उस पर भी सोच रहा था। बहुत ही गहरे रिलेशन है, बल्कि फ़्रेंच हमारी दूसरी बड़ी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और फ्रेंच प्रोविंस जो हमारा क्यूबैक है वो बिल्कुल ब्रिटिश जो प्रोविंसेस हैं रेस्ट ऑफ द कनाडा से बहुत हवालों से मुख्तलिफ है। यहाँ पर यानी फ्रेंच प्रोविंस में यानी क्यूबैक में पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत कम पाई जाती है एज अपोज टू अदर प्रोविंसेस इन कनाडा। अब आपने सिमिलैरिटीज़ की बात की, दोनों देशों के जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ तो दोनों देशों के बीच के नहीं हैं, यानी भारत और इंडिया के बीच में नहीं है, मगर उनके अपने अपने जो इश्यूज़ हैं उनमें सिमिलैरिटी है। जैसे आपने माइग्रेंट्स की बात की, गैटोज़ की बात की। अब फ्रांस को एहसास हो रहा है कि जो गैटोज़ उन्होंने पनपने दिए, उनको बढ़ावा दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है और बन चुका है। फ्रांस इस पे अब बात भी खुल के कर रहा है, भारत ने अभी अभी इस पे बात करना शुरू की है। तो क्या आप समझते हैं कि फ्रांस अपने उन प्रॉब्लम्स पे कैसे काबू पाएगा, और भारत को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स विद इन भारत फेस करना पड़ रहे हैं, वो किस तरह उन पर काबू पाएगा? देखिए, फ्रांस में तो एक हिस्ट्री ऑफ राइट्स हो गई है पिछले 2 डेकेड्स के अंदर। ये एक बड़ा ही अगर हम इसको विदाउट ओपिनियंस एक बात कहें, लेट्स गो बाय द फैक्ट्स। द इमिग्रेशन फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका, Arab countries to France has increased substantially in the last 25 to 30 years. With this increasing immigration, the demographics of France are undergoing a change. Demographics of France are quite similar to the demographics of India, by the way. India is presently about 80% Hindu. France is about 84% French. The French means out of which about 80% are French, which means European descent, and about 4-5% of non-European descent, and remaining are the immigrants. So that sort of a minority-majority sort of a relationship is 80-85% in France. India is about 78, 79, 80%. That sort of a structure, it is similar. The only difference in Indian context and the French context is the minorities in India have ethnic similarity with us, whereas minorities in France do not have ethnic similarity with them. They are European origin versus North African or Arab origin. But it is from numerical standpoint, as the population has gone up, the conflict has gone up. And so the first riots took place, big ones, 2005. फिर उसके बाद 4-5 साल के बाद again there were 4 or 5 years later there were again riots, and then again there were riots in 2018, if you remember, yellow shirts, or I think that was sort of the term that they were using. And more recently, in the last 1 month, we have seen this has resulted in loss of billions of dollars of property in the last few years for France. Just these riots, the unofficial numbers are that close to $1 billion has been lost in property damages. Some 700-800 officers have been injured.
and maybe some 5,000-6,000 vehicles have been burned, and maybe close to 1,000 people are in jails, have been arrested. This is a very, very major situation, and it keeps arising again and again in France. So the first instance that I have given, without giving an opinion, I've just stated facts, that the rioting, the data indicates the rioting in France has, the increase in rioting corresponds with the increase in the migrant population. Now, there could be two reasons why these riots take place. One could be each time there is a consideration given that there is a use of force. Last time the big issue was the stopping of non-European French residents by police, stopping of cars, random stopping, as they say, stop and search sort of a policy. That was one of the major instances at that point in time. This time it is the death of a young boy, Nihal. This is again a tipping point. So these are just tipping points. So what is simmering? What is underneath has to be discovered. Underneath the discovery is that either there could be two, I'm giving benefit of doubt to the people there. There could be two reasons. One, that these people are actually being discriminated and there is racial profiling and racial discrimination and racial action. The second could be that their expectations have come to be higher than the treatment given to them. Now you see, in any society where you have not integrated fully, you are likely to see some differences in treatment. An individual who looks alien is by the very nature going to get somewhat of a different treatment. We are after all human beings. We are not going to treat everybody in the similar manner, even if we may not be as verbose in communicating or conveying our racism. Very similar to Canada, for instance, as you were mentioning, Quebec versus, let's say, Ontario. While Quebec may be very forthright in conveying verbally, discrimination or a discriminatory view, or would make a racist comment, the people in Ontario may not be that verbose in communicating their feelings, but they may still harbor the feelings, and they may express those feelings at a particular point in time. So in France too, one of the reasons is that there could be differential treatment. But what is now happening is that there is a pushback, and that pushback has taken violent turn. So people are no longer willing to allow even the slightest of incident go by without giving it a racial undertone. Sometimes it does have a racial undertone, sometimes it does not. So there is no allowance. Why is that happening now? Let's go further. That is happening because the numbers are rising. One quarter. So the viewers would be surprised to know that 1/4 of all those people who are taking birth in France today have at least one parent who is foreign. So these numbers are rising. The actual French population is old, and particularly in cities like Paris, 40-50% of the population are all migrants. So they have come to be in a large number where they can push back. While being in large number, they are still not occupying very important positions. So again, they harbor these feelings. If you ever visit Paris, I've been to Paris, Tahir Sahib, you must have also been to Paris. It sometimes becomes difficult to find a person of, a white Caucasian male in certain areas of France. It would be very difficult to find. However, the higher positions by virtue of education, by virtue of having a lead against the new immigrants, because they've been there for some time, are occupied by them. So, when these large numbers come into play, these large numbers have an impact.
because when an action is taken by an individual, it is very easy to apprehend that person and convict. But when a large number of people come together and start acting, it is very difficult to pin the blame. How do you pin the blame? So this mob mentality has sunk deep into French areas, certain areas where it has become virtually impossible for them to control these immediately, because those numbers are so large and they are acting together. There is a greater unity. They are in those so-called ghettos. But I would like to marginally differ with you, Tahir Sahab. They are no longer, they have become townships now. Ghettos were small areas. Now there are full townships where it becomes impossible. Similar situations have been observed in countries like Colombia, countries like Venezuela, जहाँ पे पुलिस कार नहीं जा सकती. Police cannot go because they are a gangster area. Police goes and there are so many YouTube videos, you can look at them, that police cars are standing there and they are standing and people are moving around, toting guns at them. So that situation is still far, but it's not too far. Now, when these townships have emerged, they will gradually get control over those townships. Maybe at certain point in time, even the local law and enforcement authorities would come from within that township. Then it will become a complete state of anarchy. France has not taken appropriate measures, in my view, to tackle these sensitive issues on how to handle migrants. I believe that comment from the Minister of Foreign Affairs of UAE is now in circulation, where he had warned the French government in 2017 or 18 that the French government has no understanding of the people that they are allowing to come into their country and be there. Some of them have terrorist backgrounds. Some of them have criminal background. Those people are brought in an effort to rehabilitate them, but the counter happens. The rehabilitation does not happen. The people who are already there sometimes become more radicalized. So this radicalization, handling of how to de-radicalize these people has not happened. As a matter of fact, their entrance into the country has resulted in greater radicalization. So these ghettos have become townships. After townships, these will become counties, and then they will become states. It will become very difficult. Similar things have happened in Indian context. In terms of minorities, while Indian situation largely is better, much better, because why? We do not have ethnic differences with our minorities. The Muslims of India and Hindus of India have same identity. In my view, the genetic composition is identical. In addition to that, the Muslims of India have also converted from Hindus, maybe 100 years ago, 50 years ago, 200 years ago, 250 years ago. So this situation is a little bit better. However, if you view India too, we have almost close to, out of the 660, 670 odd districts in the country, about 20 districts today have more than 50% Muslim population. And there are close to 80, 85 districts where the population of Muslims is more than 20%. An analysis is done on those particular districts. I've done the analysis. The crime rates are not in comparison to the crime rates of overall of the state. The crime is higher. Similarly, the development of those districts, if you compare the overall development in terms of road infrastructure based on survey data, self-report data, I would confess that there is a limitation to our study of, because it's based on self-report. We've done survey where people have reported themselves as to their development of that road infrastructure, electricity theft, vehicle theft, petty crime. Again, that is against the benchmark of the state average. They are higher. But the situation in India and the situation in France are two different situations in this regard, that it's not based on ethnicity. In Indian context, it is largely based on religion. In French context, it is religion plus ethnicity. So they are worse off
in terms of tackling this issue, and I think it will become even more difficult issue for them to tackle going forward. जी, आपने बहुत जिसे कहते हैं थॉरोली हमें एनालाइज करके बताया कि ये चैलेंजेस और सिमिलैरिटीज़ ऑफ चैलेंजेस क्या हैं, और आपने बात की कि फ्रांस में भी कोलंबिया की तरह जिस तरह नो गो एरियाज़ बनते चले जा रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि भारत में हम लकी हैं, उसकी वजह आपने बड़ी अच्छी बयान की कि एथनिसिटी का भारत में कोई इशू नहीं है, वो सेम लीनियज है, सेम डीएनए है, सिर्फ और सिर्फ फेथ क्लब का वहाँ पे मसला है। लेकिन ताहिर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी प्लीज। भारत में भी जो लोग इसको पुश कर रहे हैं ना, ये मुस्लिम सेपरेशन, दीज आर ऑल फॉरेन एलिमेंट्स जो यहाँ पर पुश करते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनकी नस्ल जो है वो तुर्की से आई हुई है या सऊदी अरेबिया से आई हुई है। एक पुश करते हैं एजेंडा, और नेमिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर इंस्टेंस, if a person names their child Taimur in India, it's really, in this century, it's something which is undesirable. आप ये देखिए कि तैमूर was an invader who invaded India, was a butcher who marauded, hundreds of thousands of people in India too. When he came to Delhi, he made a mountain of the heads of more than 50,000 people. अगर वो एक थॉट है कि नहीं जी हमारी लिनिएज जो है वो तुर्की से आई है या सऊदी अरेबिया से आई है, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है कि वो अभी भी उन लोगों के ऊपर अपने बच्चों के नाम या ट्राइंग टू ट्रेस देयर लिनिएज, इट इज अ मैटर ऑफ सुपीरियोरिटी फॉर पीपल। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है वहां पर तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। इंडिया में भी ये एक पुश किया जा रहा है एजेंडा फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। नहीं जी हमारी जो नस्लें हैं जी वो दमिश्क से आई हैं, दमेस्कस से आई हैं। नहीं जी हमारी नस्लें जो है वो शाम से आई हैं। नहीं जी हमारी नस्लें जो है वो इराक से आई हैं। हमारी ये एजेंडा गलत है। डीएनए टेस्ट हैव बीन डन, हम सबकी नस्लें एक हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको टोकता हूँ, बड़ी अच्छी आपने बात की। जिस बात की तरफ मैं जा रहा था मैं सिर्फ जोड़ना चाह रहा हूँ और आपकी बात को कंटिन्यू रखना चाहूँगा। मैं सिर्फ जो इसमें लुकमा देना चाह रहा हूँ धीरज भाई, वो ये कि इवन ये जो तैमूर नाम है ये तो मतलब जैसे अब कोई हिटलर पे नाम रख ले वेस्टर्न वर्ल्ड में तो उसको जर्मन ही जूते मारेंगे, जर्मन ही उठ के कहेंगे कि हाउ डेयर कि हिटलर नाम रखे। कोई हिटलर नाम इधर कनाडा में किसी का रख दे तो उस पर हेट क्राइम बन जाएगा, ठीक है। कोई अच्छा, अब मुझे हैरत होती है कि औरंगजेब जो एक मर्डरर था या तैमूर जो एक मर्डरर था उसके नाम पर फखरिया नाम रखे जाते हैं। वो तो भारत का भी अपना मजाज हमारी समझ से बाहर है कि औरंगजेब के नाम पे सड़क रखा हुआ है, औरंगाबाद रखा हुआ है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि कनाडा में कोई कहे जी कि ये हिटलर कॉन्क्लेव है? इम्पॉसिबल। कोई ऐसा ये करेगा तो उस पर हेट क्राइम लगेगा, एंटीसेमिटिज्म लगेगा। अच्छा, मैं इसी बात को, आपने कहा कि ये जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारी नस्लें तो पता नहीं ताशकंद से आई हैं, अब ताशकंद वो तैमूर मर्डरर की जगह थी या समरकंद उसकी जगह थी। कोई ये कहे कि जी हम तो अरब से आए हुए हैं। मैं यहाँ पे जो बात जोड़ना चाह रहा हूँ, अरब खुद, मेरा नाम ताहिर है, ये मुस्लिम नेम नहीं है, ये अरब नेम है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। इस्लाम तो अरब में 1400 साल पुराना है ना सर। ये ताहिर नाम वहाँ के क्रिश्चियंस के भी हैं, यजीदियों के भी हैं, बिकॉज दिस इज़ अ अरब नेम, दिस इज़ नॉट अ मुस्लिम नेम। अब मैं बात जो जोड़ना चाह रहा हूँ कि भारत में तो जो अरब वर्ल्ड है वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और वो हिंद को, यानी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से एक बात एफिलिएटेड है कि उन्होंने कहा था कि हिंद से मुझे ठंडी हवा आती है। तो यानी अरब प्रॉफिट मोहम्मद से लेके, हालांकि अरब प्रॉफिट मोहम्मद से भी बहुत पहले के ज़माने के लोग हैं, लेकिन चलिए अगर हम मुसलमानों की हिस्ट्री देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने से आज के जो अरब लीडर हैं, जो अभी एक स्कॉलर भारत में थे और उनके साथ अजीत डोवाल जी ने स्टेज शेयर किया, तो ये रियलिटी क्यों मुसलमान भारत के नहीं समझते? ये मैं ये बता रहा हूँ जी, ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। आपने इतनी प्यारी बात की है कि
आप ये देखिए कि जो अरब हैं, who are supposedly the fountainhead and the flag bearers of Islam, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम लोग 1400 साल पहले जा रहे हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं जी, वो आप ही ने मुझे एक इंट्रोडक्शन करवाया था, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। डॉक्टर इश्तियाक अहमद हमारे इंस्टीट्यूशन में आए, पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं, अभी स्वीडन में प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं पंजाब के ऊपर, ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उनको एज ए स्कॉलर वी इनवाइटेड हिम एंड ही केम टू आवर इंस्टीट्यूशन and we had some significant presence of Muslim girls in our campus who had come from we were running a small program जिसके तहत वो आई हुई थी। तो he made this statement, he said मैंने इतने बुरके मैंने लाहौर में नहीं देखे जितने मैंने आपके कैंपस में देखे हैं। तो दिस इज अ स्टेटमेंट ही मेड, कोट अनकोट। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी ये इंडिया में भी these changes which are happening in terms of attire, in terms of language, ये बड़ी recent चीजें हैं, पहले नहीं होती थी ये चीजें। These are all very recent. We are degressing, they are progressing. MBS मोहम्मद बिन सुल्तान हिमसेल्फ, आप ये देखिए तबलीग की जमात उन्होंने बैन कर दी है, हमारे यहाँ उसे प्रमोट किया जाता है। He has recognized the dangers of the different thoughts, even Wahhabi thought के ऊपर उन्होंने कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं कि how this has a detrimental impact on the growth of Middle East. They are thinking 100 years ahead that they have to move away from oil economies to becoming a more open area and open to all sorts of cultures, all sorts of languages. यहाँ हम अभी भी उसी थॉट पे चल रहे हैं where we are denying our own. So ये social identity वाला issue जो है ना, we have low self esteem, we are self loathing. हमें अपने आप से नफरत है, जो चीज हमारी लोकल है उससे हमें नफरत है। Self loathing, low self esteem is an aspect which has grappled our nation and our youth particularly. Anything which is foreign is appreciated. So people actually take pride in saying कि जी मेरे तो 3 पुश्तें हम ना पहले समरकंद से आए थे। The person would not be able to pinpoint Samarkand on the map of the world, but उसको बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए। Names, keeping different sorts of these are all factors which are which I would call are not factors which will integrate a nation. These are not factors which are resulting in cultural assimilation. These are resulting in hardening of identities. जैसे कि मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि भारत देश में उर्दू लैंग्वेज हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन the Muslims. There are hardly any Muslims who speak Urdu language in India. भारत के जो तमिल मुस्लिम है, they speak तमिल, जो मलयालम वाले हैं वो मलयाली बोलते हैं। But all I'm trying to say is that there is an agenda, I believe, behind this. There are schools in India, Islamic thought schools हैं, जो कि ये बड़ा ही regressive view लोगों में promote करते हैं, promulgate करते हैं, where they make them question their identities. हालांकि मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि मुस्लिम एथनिसिटी, हिंदू एथनिसिटी नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। We are same ethnicity. People follow 2 different religions. People are same, identical in terms of their genetic composition. This is sad that this narrative never gets built up. The narrative which gets built up is the other one. और इतना regression है इसमें कि the gorge between the two will become wider in the future. आज की डेट में हमारी फ्रांस वाली सिचुएशन नहीं है। फ्रांस में एक नफरत का माहौल है, इंडिया में एक डिस्ट्रस्ट का माहौल शायद हो सकता है इन सर्टेन एरियाज, बट नफरत का माहौल नहीं है। वहां नफरत का माहौल है। इंडिया में इनसिक्योरिटी का माहौल हो सकता है कि एक हिंदू जो है
वो एक टोटली फुली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जाते हुए एक बार हिचकिचाए. It is possible, but it is not an element of, there is no element of hatred. There may be an element of insecurity there. So it is, our situation is different from France, but we need to tackle this right away. It may eventually end up becoming that, we are Arab descent people, and they are the Indian descent people. I don't know what's going to happen in 25 years. बट ये अगर थॉट को कर्टेल नहीं किया गया तो दिस कैन टेक वेरियस कॉनोटेशंस. ऑलरेडी a great deal of falsehood was promulgated by the Britishers. Aryan invasion theory, there is no merit to that theory. Actually it is not a theory. Max Muller he never intended to promulgate Aryan invasion theory. When Indians were writing Vedas 3,000, 4,000 years ago, Europe was in dark ages at that point. They were hunter-gatherers, और यहाँ पर civilization और colonies develop हो रही थी with one of the best drainage system in the world, where highest level of architecture was being built in India. उस वक्त तो dark ages में हुंस बैठे हुए थे यूरोप में. तो वहां से लोग यहाँ नहीं आए. ये जो मेरिट, ये इसमें मेरिट ही नहीं है कोई. यहाँ के लोग यहीं थे. अगर आप उससे पीछे चले जाएं तो अंकारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में तो सारा ही एरिया एक साथ था. उसमें गौर्ज आया, डिवीजन आया, 2 एरियाज बट गए. अब कितना पीछे जाएंगे आप? सो द पॉइंट इज दीज थॉट्स ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन, आज भी भारत में अच्छे पढ़े लिखे लोग इन चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं. नहीं जी, हम तो नॉर्थ इंडियन है, हम ऐसे हैं, ये साउथ इंडियन है, ऐसे हैं जी, ये द्रविडियन है, ये आर्यन है, हम आर्यन है और ये द्रविडियन है. हालांकि there is absolutely no merit in the Aryan invasion theory at all. It is not a theory actually. पर ये notions जो हैं इनको counter नहीं किया गया. आज हम कम से कम इस position में हैं as a strong powerful nation where we can counter these narratives. Once we start countering these narratives, आज एक बहुत अच्छी statement NSA ने बोली है. उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी खदीजा, उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की उनको शॉल और कपड़े उनको पसंद थे. ये हमारी लिंकेज है. और भारत के जो मुस्लिम हैं, दे आर वेरी सिक्योर ऑफ हू दे आर. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एडवोकेसी ग्रुप, एंड इंडिया हैज ग्रेट टॉलरेंस फॉर डिसेंट. हमारे यहाँ रोज डिसेंट होता है डेली. वो चाहे लोकल लेवल में पंचायत में बैठे लोग, उनके खिलाफ हो डिसेंट, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो. डिसेंट इज देयर. इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर. बीट एनी गवर्नमेंट. मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि डिसेंट. एवरी गवर्नमेंट हैज फेस्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसेंट, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के टाइम पे हो. डिसेंट इज कॉमन एंड पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज सो स्ट्रांगली, so vociferously. As a matter of fact, यूरोप में ज्यादा curtailment होती होगी लोगों की डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर. लोगों की कन्विक्शन ज्यादा होती होंगी, ज्यादा सीवियर होती होंगी. भारत में कोई इतनी सिवेरिटी नहीं है. हार्डली देयर वुड बी हार्डली एनी केसेस. अगर पर 100,000 में जाएंगे तो इट विल बी मिनिस्क्यूअल इन टर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ indictments, convictions, incarcerations resulting from abuse of freedom of speech. These numbers would be few, very very few. So I must tell you that the point that you made, ये thought को, ये regressive thought को हमें बदलना पड़ेगा. We have to recognize India also needs a truth and reconciliation commission. इसके ऊपर बहुत पहले से बात हो चुकी है. फ्रांस में तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पता नहीं कभी बना या नहीं बना, पर भारत में तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना ही चाहिए. ये हो गया सो हो गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी आर नाउ गोइंग टू बिकम इन टर्म्स ऑफ इवन नॉमिनल टर्म्स, पीपीपी बेसिस पे तो हम थर्ड हैं. नॉमिनल टर्म्स के ऊपर वी आर द 5th लार्जेस्ट. वी आर गोइंग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून, मे बी दिस ईयर इटसेल्फ. 4th largest economy in the world. We have truly arrived as a nation. We must find ways
to curtail these negativities, and we should not fall into the trap that France has fallen into. We should not allow these ghettos to become power groups. We should not allow these ghettos to become no-go areas. We should not allow. There has to be a greater assimilation, greater integration between people, and people-to-people interaction, because we are same ethnicity can be much higher. जी, हमने बातचीत शुरू की थी फ्रांस और भारत के रिलेशनशिप और जो इश्यूज दोनों को फेस करने पड़ रहे हैं उनकी सिमिलरिटी से, और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अपकमिंग विज़िट टू फ्रांस जो है वो बहुत सारे नए एग्रीमेंट भी हमारे सामने लेकर आएगा, और उस विज़िट में जो रिलेशनशिप की हाइट्स हैं वो और हमारे सामने वाज़े होंगी, अगरचे हमें आइडिया है कि वो रिलेशनशिप बहुत हाइट्स पे हैं। बातचीत को हम आगे जब लेकर चले तो धीरे साहब हमने देखा कि जो लोगों के माइंड्स में, ख़ास तौर पर जो भारत के मुस्लिम्स के जहनों में, सभी मुस्लिम्स के जहनों में नहीं लेकिन कुछ मुस्लिम्स के जहनों में ये है कि हम भारतीय नहीं हैं, वो भी अब अवेयरनेस बन रही है कि ऐसी बात नहीं है, फेथ क्लब डिफरेंट है, अदरवाइज़ डीएनए भी एक है, लीनिएज भी एक है, और फिर जो अरब वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप भारत के मुसलसल बनते चले जा रहे हैं उससे भी ये बात वाज़े होते चली जा रही है। तो आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस नरेटिव की आपने बात की कि वो नरेटिव नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि वो अवेयरनेस नहीं है। नरेटिव तो बिल्ड करना पड़ता है, अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ता है। तो वो अवेयरनेस आप समझते हैं कि भारत में जो मुझे अब आना यानी दिखना शुरू हो गई है कि वो अब आ रही है अवेयरनेस लोगों में, वो आपको लगता है कि नए प्रोग्रेस करते हुए भारत को वो अवेयरनेस अपने फ्रूट्स दे सकेगी? देखिए जी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। द यूबिक्विटी ऑफ इंटरनेट and ubiquity of mobile communication and computing devices will result in democratization of information and democratization of knowledge. We are no longer dependent on seeking out information. मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जी, जब libraries were at privilege. Less than 1% of the population of India had access to any library. लाइब्रेरी में आप जाइए, लाइब्रेरी में किताब में सर्च करिए, कुछ लर्न करिए। उसके बाद एक ऐसा जमाना आ गया जब लाइब्रेरीज का एक्सेस ज्यादा बढ़ गया, तो उस जमाने में कुछ प्रोफेसर्स ऐसे डोमिनेंट फोर्सेस वुड कम एंड कन्वे एंड पीपल वुड फॉलो देम। आज की डेट में सारे खुद प्रोफेसर हैं। जब से भारत की या वर्ल्ड की हिस्ट्री नॉन हिस्टोरियंस ने लिखनी शुरू की है, which means the democratization of history writing has taken place, that has and will change the course of our thinking. आज की डेट में जब एक टिपिकल इंडियन मुस्लिम जॉर्डन के राजा के बेटे की शादी होते ऑनलाइन देखता है, और वो देखता है कि ये वो हैं जो कि अहल अल बयात हैं, जो कि फ्रॉम द लिनिएज ऑफ द प्रॉफिट हैं, उनके ब्लड से हैं। किंग ऑफ जॉर्डन इज फ्रॉम द ब्लड लाइन, और उनके बेटे की जो शादी हो रही है उसमें कितना यूरोपियन माहौल है, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज नेचुरली कमिंग टू पीपल, दे विल रियलाइज कि ये जो रिग्रेसिव जो थॉट हैं, ये जो रिग्रेसिव जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो रिग्रेसिव स्कूल्स ऑफ थॉट, जो रिग्रेसिव थॉट पैदा करते हैं लोगों में, वो उनका पर्दाफाश खुद हो रहा है। People are seeing this in the palms of their hands. People will see that in the past the relationship between various communities have gone through ebbs and tides, जो ऊपर नीचे चले हैं। आज की डेट में कौन कहाँ है? Today is an era of science. जो देखिए अमेरिकन प्रोग्रेस, यूरोपियन प्रोग्रेस जो हुई है वो एक नया दौर है। ये पिछले 200 साल 250 साल में हुई है। This has its, हमारा एक दौर था, अब उनका दौर है। We have to learn, we have to adapt from that particular. अब आज की डेट में we do have Ayurveda, we do have homeopathy, but at the same time you cannot negate allopathy.
just because it is Western medicine. आपको उसे embrace करना ही पड़ेगा. You have to go hand in hand. आप इंटरनेट के जमाने में बैठे हैं. Today there are 350 या 400 million users of Twitter. ये पिछले हफ्ते या 15 दिनों में मार्क जुकरबर्ग ने एक नया अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, थ्रेड या थ्रेड्स. उसमें मेरे ख्याल से विद इन अ वीक और सो 10-15 दिन के अंदर अंदर वो 100 मिलियन यूजर हो गए हैं. इसका क्या मतलब है? There is an insatiable desire of people to connect and to know. I am not dependent upon a higher power, a person in position of authority to convey to me certain things. I will cherry pick. मैं खुद ढूंढूंगा, खुद सुनूंगा. हम लोग ये बात कर रहे हैं, जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जो कुछ जानना चाहते हैं, वो जान लेते हैं. उसके बाद उसको आगे वेरीफाई करते हैं, सर्चेस मारते हैं, उसके बाद अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं. भारत देश में भी वही होगा. As the internet ubiquity increases, as the mobile communication and computing devices increases, there will be greater interaction between people from different parts of the world. They will have new benchmarks. वो नए benchmarks जो हैं, वो नए benchmarks बनेंगे कि पहले यहाँ पर सोच थी, अब वो सोच ऊपर उठ गई है. People will start comparing कि the Muslims living in the Middle East, the Muslims living in Istanbul. आज मुझे इस्तांबुल जाने की जरूरत नहीं है वहां के बारे में कि the so-called place जिसके ऊपर जहां पर इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा थे और आज वो दोबारा उसको उस पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं. वहां के सिटीज की बीचेस को आप देखें तो वहां पर आपको क्या दिखता है या क्या नहीं दिखता है. वहां पर किस तरह के लोगों के खाने हैं, किस तरह के उनके ड्रिंक्स हैं, किस तरह उनके अटायर हैं, किस तरह से वो अपना समय गुजारना चाहते हैं, अपना टाइम गुजारना चाहते हैं, किस तरह की उनकी रीडिंग हैबिट्स हैं, किन वेबसाइट्स पे वो जाते हैं, क्या वो उनके एंटरटेनमेंट के साधन है. ये लोगों को जाके वहां देखने को उनको ऑनलाइन मिल जाएगा. दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन will I hopefully feel will change the thought process of the people in India. Minorities in India, they will start to appreciate as to what is happening. What is the treatment of minorities in Europe? What is the treatment of minorities in Arab world? अब Arab world की भारत के साथ एक relationship इतनी strong होती जा रही है because they have come to appreciate कि 20 करोड़ मुसलमानों के साथ अगर 100 करोड़ हिंदू शांति से रह रहे हैं and the Muslim community is growing and Muslim community is becoming stronger, this is a testimony to the Hindus of this nation. India is secular because Hindus are secular. वो secular हैं, वो इसीलिए तो secularity चल रही है. Otherwise, at the time of 1947, when a nation was carved out of India to make Pakistan, which was supposed to be the safe haven for the Muslims, then de facto what was left over could have become a Hindu nation. By de facto कि you have created a nation for the Muslims, जो बाकी बच गया वो तो हिंदुओं का है. So, but India chose to not have that path, and this appreciation is now happening in Saudi Arabia. They know, can Saudi Arabia open its borders to people from India, Pakistan and Bangladesh? कि आइए, मैं हर साल I throw a challenge at them कि वो साल में 2 लाख permanent residencies दें सिर्फ, only 2 lakh. They should not give more than that. अरे वो छोड़ दीजिए, 1 लाख PR देने शुरू कर दें वो. Let them take a step. They will not do it. They know that we are culturally different. They know our culture is so strong, we will not assimilate. It will take several generations, तब भी वो assimilation होना मुश्किल है. भारत देश, despite Islamic invasions, continue to be Hindus, despite onslaught of several invaders. क्यों? Culture इतना strong है, it was virtually impossible for people to be cast into a particular mold. So while sympathies can be expressed by the Middle East towards
the plight of Muslims in various parts of Southeast Asia, but I'm sure that they would not open their doors to all the people here. Okay, we will start offering political asylum to people from India, Pakistan, and Bangladesh, so that they can, if they have any difficulties in India, we'll give them political asylum and we'll give them permanent residency and they can come and stay here. That's never going to happen. It has not happened in the past, and I don't foresee in next 20 years that happening. So the relationship between India and them is strong because they have come to appreciate कि यही लोग इन सब चीजों को संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद. ये ऐसी बातचीत है धीरज साहब, जितनी हम करें कम है, और हमारी कोशिश होगी कि हम हर हफ्ते इसी तरह आपसे बातचीत करते रहें. आपने जो आखिर में बात की कि सऊदी अरब हो या जीसीसी का कोई और कंट्री हो, वो किसी सूरत भी सिटीज़नशिप इस तरह नहीं खोल सकता. वो आपने 20 इयर्स नेक्स्ट के हवाले से एक फोर्सी करते हुए कहा कि पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा. मुझे तो 200 साल आगे भी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा. उसकी वजह ये है कि जिस दिन उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, उन बेचारों का अपना कल्चर तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो खुद डिस्टिंक्ट हो जाएंगे. और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से जीसीसी की पॉलिसीज़ चल रही हैं, ऑनेस्टली गुड फॉर देम एज वेल एज गुड फॉर द एक्सपैट्रिएट्स. इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है. आपने बहुत अच्छी बातें की, और यही बातें प्रोफेसर साहब आपके साथ आने वाले दिनों में हम करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा की. बहुत ही इंसाइट, इंटरेस्टिंग इंसाइट, डीप थॉट्स के साथ उन्होंने अपनी बातें पेश की, और उन्होंने जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की, वो बहुत ही बड़ी बात है. अगरचे प्रोफेसर धीरज शर्मा जैसे स्कॉलर्स जब तक इंफॉर्मेशन के हब को थोड़ा सा दुरुस्त नहीं रखते, तब तक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी ठीक से नहीं होती. क्योंकि इंटरनेट पे वही इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो लोग बातें कह रहे हैं, जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो वीडियो बन रहे हैं. अगर वीडियो भी सब स्टैंडर्ड होंगे, किताबें भी सब स्टैंडर्ड होंगी, इंफॉर्मेशन भी सब स्टैंडर्ड होंगी, तो फिर लोगों को वही कुछ मिलेगा जो कुछ है. लेकिन अगर धीरज शर्मा जी की तरह बातें बहुत ही अपस्केल होंगी, तब आपको इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर भी ठीक से मिलेगी. आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया. आप हमारे टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए. यूट्यूब पर इसके डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आप हमारी एप्स रॉको, अमेज़ॉन फायर, एंड्रॉयड, एप्पल पे डाउनलोड कीजिए. 24/7 you can watch us. You can watch our news, views, and entertainment. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.